रेट कर रहे हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन की वर्कशीट का. Says in an experiment to study the spread of soil disease, an area of 10 meters square of soil was exposed to infection. In a simple model, it is assumed that the infection area grows at a rate which is proportional to the product of the infected area and the uninfected area. Initially, 5 meters square was infected, and the rate of growth of infected area was 0.1 meters square per day. At time t days after the start of the experiment, area A is the infected area and 10 minus A is the uninfected area. Show that dA upon dt is equals to this. Of this statement right here, infection area grows at the rate. Infection area grows at the rate. Rate का मतलब होता है d upon dt. Infected area इन्होंने A से represent किया हुआ है. So this yellow part represents dA upon dt is proportional to, तो proportionality का sign लाएंगे, product of the infected area and uninfected area. So A times 10 minus A. So proportionality sign को खत्म करके हम equals to का sign लाएंगे, K times A and 10 minus A. इन्फेक्टेड एरिया और अनइन्फेक्टेड एरिया उन्होंने हमें बताया हुआ है ए और 10 माइनस ए. ओके, सो अब इनिशियल पैरामीटर्स भी गिवन है, ए 5 गिवन है और डी ए अपॉन डी टी 0.1 गिवन. So 0.1 equals k times a is 5 and 10 minus a is 10 minus 5, which is 5 again. So when you divide 0.1 and 25, you get 0.004. So dA upon dt equals 0.004 a times 10 minus a. Yeah. Part 2 start करते हैं. अच्छा, by first expressing 1 upon 8 times 10 minus a in partial fractions, solve the differential. So part 2 is write the differential equation again, dA upon dt equals 0.004 a 10 minus a. इसको रीअरेंज करते हैं, dA एक साइड पे आएगा, dt एक साइड पे आएगा, और dA की साइड पे a की टर्म्स आनी चाहिए, so they go in the denominator a times 10 minus a, और यहाँ पे आ गया 0.004 dt. Now we integrate both sides, और उन्होंने इंटीग्रेशन की हिंट दी हुई है कि आपने पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना है, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि how do we integrate this. We have to break this into partial fractions. जिसकी partial fraction क्या होगी, a upon a plus b upon 10 minus. इधर LCM ले लेते हैं, a times 10 minus a, कैपिटल A के साथ 10 माइनस A मल्टीप्लाई हो गया और B के साथ A मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल्स 1 अपॉन A 10 माइनस A. एक्सक्यूज मी, डिनोमिनेटर्स हो गए कैंसिल, A को पहले ले लेते हैं 0, तो हमारे पास आ रहा है 1 इज इक्वल्स टू 10 कैपिटल A और कैपिटल A आ रहा है 0.1. फिर हम A को ले लेते हैं 10, उससे कैपिटल A मल्टीप्लाई हो गया 0 के साथ और B मल्टीप्लाई हो गया 10 के साथ, सो अगेन B इक्वल 0.1.
सो ए और बी दोनों 0.1 के इक्वल आ रहा है। अच्छा, ठीक है। Okay, so we've broken it into partial fraction. So we have integration of 0.1 upon a plus 0.1 upon 10 minus a dt equals integration of 0.004 dt will just be 0.004 times t. तो राइट हैंड साइड की हम इंटीग्रेशन साथ ही कर लेते हैं। 0.004 टी आ गया। एक साइड पे सी लिखना होता है, मैं राइट साइड पे लिख बस। ओके, अब लेफ्ट हैंड साइड को अभी इंटीग्रेट करना है। हमारे पास डिनोमिनेटर में एक फंक्शन है एफ एक्स और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव ए का डेरिवेटिव वुड, अच्छा दिस इज डी ए नॉट डी टी, सॉरी। न्यूमरेटर में इसका डेरिवेटिव 1 है हमारे पास। अगर हम 0.1 को बाहर निकाल दें, वी गेट 1 अपॉन ए एंड देन टी ए, और फिर प्लस दूसरे भी 0.1 को बाहर निकालते हैं और 1/10 माइनस ए डी ए इक्वल 0.004 टी प्लस। तो 0.1 ln ए प्लस 0.1 ln, अच्छा, अब इसका जो डेरिवेटिव है 10 माइनस ए का वो -1 है, तो वो हम इसको भी -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और बाहर भी -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो विल गेट -0.1 ln 10 माइनस ए इक्वल 0.004 टी प्लस सी। ओके, अब हमने सी फाइंड करना है, तो टी और ए की जो इनिशियल वैल्यूज ए 5 गिवन है। In an experiment to study the spread of soil disease, an area of 10 meters square of soil was exposed to infection. अच्छा, तो मेरे ख्याल में टाइम 0 पे ए 10 है। तो when t is 0, a is 10, confirm करना है। ए है इंफेक्टेड एरिया, अच्छा, टाइम 0 पे ए 5 है। A is the infected area, not the total area। ये तो total area बताया हुआ है, infected area जो है वो 5 है। ये A है और टाइम 0 पे infected area is 5। Initially 5 meters square was infected, so A is 5, T is 0। So let's substitute that here. A equals 5, T equals 0। So we get 0.1 ln 5 minus 0.1 ln 5 again equal 0.004 times 0 plus c। तो इससे तो हमारे पास c is equals to 0 आना चाहिए। हाँ, यही आता है। Okay, and then the equation becomes 0.1 ln a minus 0.1 ln 10 minus a equals 0.004। Let me see इसके बाद क्या करने को कहा है। By expressing this, solve the differential equation obtaining an expression of t in terms of a। तो t को सब्जेक्ट बनाना है। Obtaining an expression for t in terms of a।
ठीक है, तो we can also take ln कॉमन, t को सब्जेक्ट बनाना है, so it's just going to be 0.1 कॉमन ले लेते हैं, और फिर हमारे पास आ गया ln a माइनस ln 10 माइनस a इक्वल्स t इधर कर लेते हैं और 0.004 इधर डिवाइड कर लेते हैं. So what do we get? 0.1 divided by 0.004 is 25. So we're getting 25 ln, यहाँ पे मैं log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, a upon 10 minus a equals to t. So ये t सब्जेक्ट बन गया, t in terms of a आता. नेक्स्ट पार्ट में क्या कहा है? Find the time taken for 90% of the soil area to become infected. अच्छा, टोटल एरिया क्या था? 10. तो 90% एरिया हो जाएगा 9. तो अब ए हमने 9 लेना है और टी फाइंड करना है. सो 25 ln 9/1 इक्वल्स टू टी. सो अब इससे टी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. 25 into ln 9 which is 54.9. ये आंसर है, और मेरे ख्याल में डेज की बात हो रही थी. हाँ, 0.1 meter square per day, so the unit would be in days. So this is in days. अगला क्वेश्चन करते हैं. Next I'm going to do question 13. The variable x and y are related by differential equation xy plus 4 dy over dx equals 6xy. It is given that y equals 32, x equals 0. Find an expression for y in terms of x. Okay. So इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए we should have dy on one side, dx on one side. y के जो भी एक्सप्रेशन है वो लेफ्ट साइड पर ले आप, सो इट्स जस्ट 1y, तो वो अपॉन y हो जाएगा. और यहाँ पे आ गया 6x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4. y की टर्म लेफ्ट साइड पे ले आए, x की टर्म राइट हैंड साइड पे ले आए. नाउ वी कैन इंटीग्रेट. ओके, सो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/y dy इक्वल्स 6. फॉर नाउ मैं बाहर लिख रही हूँ. यहाँ आ गया x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx. सो अब डिनोमिनेटर में फंक्शन है क्या, न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव है? अगर है तो दिस becomes equals to ln fx. So we have a function y in the denominator and we have its derivative 1 in the numerator, so we get ln y equals, we have a function x squared plus 4 in the denominator. We do not have its derivative 2x in the numerator, but we do have 2. We do have x, so 2 इधर multiply कर लिया, 2 इधर divide कर लिया. So we get 3 ln x squared plus 4. एक साइड पे प्लस c लिखना है, so let it be this side.
Up they're saying that when y is 32, x is 0. So we get ln 32 equals 3 ln 4 plus c. So we're getting ln 32 minus 3 ln 4 plus c. मैं log की प्रॉपर्टी यूज करके इस 3 को 4 की पावर में लिखें ln 32 माइनस ये 3 4 की पावर में चला जाएगा तो 4 क्यूब क्या होता है 64. So we have ln 32 minus ln 64 equals to c. Equals to c. So we get ln 32 by 64 equals c. ये तो आ गया ln half equals c. So अगर हम डेसिमल को खत्म करना चाहें तो आई मीन फ्रैक्शन को खत्म करना चाहें तो हम इसे ln power ln2 power -1 लिख सकते हैं which gives us minus ln2 equals c. So our c is coming out to be negative ln. So this becomes ln 30, no, not this. This becomes ln y equals 3 ln x square plus 4 negative ln 2. ये यार ऐसे ही कुछ और है थोड़ी सी different formats. Okay. Next, we have to make y the subject. Excuse me. Find expression for y in terms of x. Y को subject. So, क्या किया जा सकता है कि यहाँ कह देते हैं ln y और यहाँ पे 3 को पावर में ले जाते हैं x स्क्वायर प्लस 4 क्यूब माइनस ln 2. अब मैं राइट हैंड साइड पे लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके सबट्रैक्शन डिवीजन में चेंज हो जाएगी और फिर ln और ln अगर दोनों साइड पे है तो वो कैंसिल हो जाते हैं. सो y इक्वल्स x स्क्वायर प्लस 4 क्यूब अपॉन 2. ये आंसर. तो इसमें हमने काफी सारा लॉग भी यूज किया. तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं. 15. This is the last question we're discussing on differential equations. So we have to solve dy by dx equals e power 2x plus y. Okay. Y की टर्म्स एक साइड पे करनी है, x की टर्म्स एक साइड पे करनी है. So for that, इसको पहले ब्रेक कर लेते हैं. हमें ओ लेवल से पता है कि ए एम टाइम्स ए एन जो होता है दैट्स इक्वल्स टू ए एम प्लस एन. सो दैट मीन्स ए एम प्लस एन ऐसे लिखा जा सकता है. सो ई पावर 2x प्लस वाई को अगर हम ब्रेक करें तो बन जाएगा ई पावर 2x times e power y. So I'm going to rewrite this as e power 2x times e power y. अब e power y को लेफ्ट साइड पे लेके जाते हैं.
and we have e power 2x dx here. And इस e power y को मैं न्यूमरेटर में लेके जा रही हूँ. It's going to be e minus y dy equals e power 2x dx. So अब हम दोनों साइड को इंटीग्रेट करेंगे. So e power fx की इंटीग्रेशन क्या होती थी? E power fx upon f prime. So it's going to be e power minus y upon minus 1 equals e power 2x upon 2. एक साइड पे प्लस c करना होता है. Let's do it at the right. So plus c. अब x 0 है और y 0 है. तो c क्या होता है? X is 0 and y is 0. So e power 0 upon minus 1 equals e power 0 upon 2 plus c. So we get minus 1 equals half plus c. So c equals minus 3 upon. So we have e minus e power minus y equals half e power 2x minus 3 upon. क्या इसमें सब्जेक्ट बनाना है हमने किसी वेरिएबल को? Yes, we do have to make y the subject. Obtaining the expression for y in terms of x. Okay, let me confirm यहाँ तक ठीक है. अब y को सब्जेक्ट बनाना है. So what do we do? नेगेटिव को दूसरी साइड पर लेके जाते हैं. So we get e power minus y e power minus y equals negative half e power 2x plus 3 upon. Yeah. अब e को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे. It changes into ln. So minus y equals ln negative half e power 2x plus 3 over 2. And then take negative 1, multiply negative 1 on both sides. So you get negative ln minus half e power 2x plus 3 over 2. इस नेगेटिव को आप न्यूमरेटर में भी लेके जा सकते हो बाय द वे. सो पावर में भी लेके जा सकते हो. सो it can also be written as or y equals ln. पावर चली गई न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मैं 2 कॉमन ले रही हूँ और यहाँ मैं लिखती हूँ 3 minus e power 2. I've just slightly rearranged the numerator. So this could be our answer as well. और एक और स्टेप भी हो सकता है. अब पावर जो -1 है वो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देगी और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर. So you may also write this as your final answer. In fact, ये लिखा हुआ है मार्किंग. This is fine. This is fine. Unless question कहे कि y equals ln a upon b की फॉर्म में आंसर बताए तो फिर ये करना. इसमें ख्याल में इधर एंड करते हैं. डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया. अब इंशाल्लाह कल we start S1. If you have any questions, please ask. नहीं है तो you guys can go and inshallah I'll see you tomorrow. S1 start करेंगे.
अल्लाह हाफिज।